Welcome back, word warriors. Now it's time for part 2 of our letter E. Welcome back to the word meaning series, where every episode adds new power to your vocabulary. These E words will make your English sound elegant, expressive, and expert level. Ready to collect today's word powers? Let's go. The first word is engender, and the meaning is to cause, प्रोड्यूस और गिव राइज टू अ फीलिंग और सिचुएशन. मतलब जब आप किसी सिचुएशन को, फीलिंग या कंडीशन को एक राइज दे रहे हो, एक एग्जिस्टेंस दे रहे हो, ठीक है. इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट रिजल्ट्स लाइक इमोशंस, ऑल्टीट्यूड्स और सोशल इफेक्ट्स रादर दैन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. कि मतलब अगर कोई मतलब आप में फीलिंग आ रही है तो वो क्यों आ रही है, ठीक है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. एग्जाम्पल, द स्पीच एनजेंडर्ड होप अमंग द पीपल. ठीक है. द स्पीच वॉज द कॉज ऑफ द feeling of hope among the people. So that is engendered. Now we have enigmatic, and the meaning is mysterious, puzzling, and difficult to understand or explain clearly. Basically something or someone that is mysterious, puzzling है, ठीक है, difficult to understand है, एक बार में आप नहीं समझ सकते. And it suggests hidden meaning or complexity, something which is very mysterious, ठीक है, कि आपको नहीं पता किसी के दिमाग में क्या चल रहा है. And this makes you curious and confused. Example, he gave an enigmatic smile. A smile that was confusing and mysterious. Now we have enkindle, and the meaning is to ignite, inspire or arouse a feeling, passion or fire. Enkindle का meaning होता है कि आप एक feeling को या फिर passion को, emotion को, ideas को एक ignite होने का, existence में आने का एक मौका दे रहे हो, ठीक है. It often referred to lighting a fire, but is now commonly used in figurative sense. Example, the story enkindled her interest in history. Now we have enmesh, and the meaning is to trap or involve someone deeply in a complicated situation. enmesh का मतलब होता है कि आप किसी को ट्रैप कर लो या फिर किसी को एक complicated situation में जो है involve कर लो, ठीक है. एंड ऐसे मतलब सिचुएशन या फिर रिलेशनशिप दैट इज हार्ड टू एस्केप. दिस सजेस्ट बीइंग कॉट लाइक इन अ नेट ऑफन अनविलिंगली. मतलब आप किसी सिचुएशन में ना फंस गए हो आके एंड यू डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट स्पेस. एग्जाम्पल, ही बिकेम एनमेश्ड इन लीगल ट्रबल्स. मतलब वो फंस गया उसमें, अब उसको नहीं पता वो कैसे निकलेगा. Now we have ennoble, and the meaning is to make someone morally better, honorable or noble in character. Basically जब आप किसी को एक डिग्निटी, एक ऑनर, एक रिस्पेक्टफुल वे में एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, यू गिव देम मोरल एलिवेशन. इट कैन रेफर टू इम्प्रूविंग समवन्स कैरेक्टर और मेकिंग एन एक्शन और पर्पस seem more noble and worthy. For example, her kindness ennobled her actions. कि मतलब उसने कोई अच्छा काम तो किया, बट उसके बाद she was not arrogant about it कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया. नहीं, the way she was after it, her kindness and her down to earth nature was the thing that ennobled her actions. कि उसके actions को भी ना और अच्छा कर दिया और elevate कर दिया. Now we have Enroute, and the meaning is on the way or during a journey to a destination. Enroute basically means on the way, ठीक है. It is in the process of traveling to a destination. डेस्टिनेशन की बात नहीं हो रही है, जर्नी की बात हो रही है, ठीक है, मूवमेंट की बात हो रही है. एग्जाम्पल, द ट्रेन इज en route to Delhi, मतलब on the way. Now we have Enshrine, and the meaning is to preserve something as sacred, important or legally protected. मतलब जब आप किसी चीज़ को preserve करते हो या फिर protect करते हो ये बोल के कि वो चीज़ जो है sacred है, important है and deeply respected है, ठीक है, उस चीज़ को कोई हिला नहीं सकता, कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता. It can refer to a physical placement or symbolic protection of values and rights. Example, freedom of speech is enshrined in the constitution. उसको जो है कोई भी आके चेंज नहीं कर सकता कि नहीं यार ये चीज़ तो नहीं वैलिड, इसको हटाओ, नहीं. दैट इज मॉरली सपोर्टेड. नाउ वी हैव एंटेल, एंड द मीनिंग इज टू इन्वॉल्व, रिक्वायर और रिजल्ट इन समथिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस. एंटेल का बेसिकली ये मतलब होता है कि विच इज नेसेसरी एंड एक अनअवॉइडेबल चीज़ जो कि एज अ कॉन्सिक्वेंस होएगी ही होएगी, ठीक है. इफ वन थिंग एंटेल्स अनदर, द सेकेंड फॉलोज नेचुरली फ्रॉम द फर्स्ट. अगर एक चीज़ की वजह से दूसरी हुई है तो वो दूसरी पहले वाली चीज़ की वजह से होनी ही होनी थी. फॉर एग्जाम्पल, द जॉब इंटेल्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स. जब तुमने वो जॉब प्रिक्योर करी, यू न्यू दैट यू वुड हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है, तो वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है. Now we have entice, and the meaning is to attract or persuade someone with temptation or promises. मतलब जब आप किसी को attract करते हो या फिर persuade करते हो
टू डू समथिंग बाय ऑफरिंग प्लेजर, बेनिफिट या फिर कोई रिवॉर्ड, ठीक है, आप टेम्प्ट करते हो उनको कि हाँ यार आप मेरे लिए ये चीज़ कर दो ना. इट ऑफन सजेस्ट टेम्पटेशन एंड द एग्जाम्पल इज द ऑफर enticed many customers. Now we have entreat, and the meaning is to beg or request someone earnestly and seriously. Entreat का मतलब होता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा plead कर रहे हो, beg कर रहे हो, ठीक है, for something. It shows strong emotion and desperation, often involving humility or urgency. कि यार आप please मेरे लिए कर दो, ठीक है. Example, she entreated him for forgiveness. Now we have enumerate, and the meaning is to list things one by one in a clear and organized way. Enumerate का मतलब होता है कि आप हर एक चीज़ को जो है ना एक क्लियर ऑर्डर में जो है बताओ कि हाँ ये चीज़ है, फिर ये चीज़ है, फिर ये चीज़ है, ठीक है. इट इज़ ऑफन यूज्ड इन फॉर्मल राइटिंग्स और एक्सप्लेनेशन. एग्जाम्पल, द टीचर enumerated the main points of the lesson. Now we have enunciate, and the meaning is to pronounce words clearly and articulate each sound properly. Enunciate का मतलब होता है कि आप हर एक वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस करो एंड जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, उसकी आप स्पेलिंग्स जो है आप सही से लिख रहे हो, ठीक है, एंड समथिंग विच इज ईजी टू अंडरस्टैंड, मेसी हैंड राइटिंग नहीं, ठीक है. इट कैन ऑल्सो मीन्स एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, कि आपके जो मन में है, ठीक है, आपके जो दिमाग में आप जो सोच रहे हो, आप वो उसको सही तरीके से आर्टिकुलेट कर सको, आप सही तरीके से एक्सप्रेस कर सको कि सामने वाले बंदे को समझ में आए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो. एग्जाम्पल, प्लीज एनंसिएट योर वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग. Now we have envisage, and the meaning is to imagine, foresee or plan something in the future. मतलब जब आप किसी चीज़ को अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हो, पिक्चर करते हो, ठीक है, या फिर फोरसी करते हो कि हाँ यार मेरे फ्यूचर में ना ऐसा होएगा वैसा होएगा. इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग अ मेंटल इमेज ऑफ अ पॉसिबिलिटी, प्लान और आउटकम, ऑफन विदाउट इंटेंशन और एक्सपेक्टेशन. आप अभी वो चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, ना आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है, बट यू फॉर्म अ मेंटल पिक्चर कि हाँ यार 5 साल बाद ना मेरे पास ये गाड़ी होएगी, मैं यहाँ पे रहूँगा, ठीक है, मेरे ये दोस्त होंगे. नाउ द एग्जाम्पल इज शी envisaged अ सक्सेसफुल करियर. The next is Epicure, and the meaning is a person who enjoys fine food, luxury and pleasures of life. ऐसा person जो कि अच्छा खाना, लग्जरी एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ को जो है ना बहुत अच्छे से इंजॉय करता है, ठीक है. दे हैव रिफाइंड टेस्ट एंड टेक ग्रेट प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, ठीक है. द वर्ड सजेस्ट अप्रिसिएशन एंड डिसर्नमेंट रादर दैन ग्रीड. ग्रीड नहीं है कि हाँ यार मेरे को जो है महंगा खाना खाना है या जो भी, नहीं. They have a good taste. Example, he is an epicure who enjoys gourmet meals. Now we have epigram, and the meaning is a short, witty and clever saying or poem with a message. एपिग्राम जो है एक शॉर्ट, क्लेवर और एक विटी स्टेटमेंट या फिर पोएम होती है जो एक्सप्रेस करती है एक आइडिया इन अ शार्प और मेमोरेबल वे. एपिग्राम्स यूजुअली कंटेन ह्यूमर, आयरनी और इंसाइट. एग्जाम्पल, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट इज अ फेमस एपिग्राम. The next is epilogue, and the meaning is the concluding part of a book or a story that summarizes events. Epilogue जो होता है ना, लाइक एक नॉवल के या फिर स्टोरी के ना एंड में होता है, जो कि पूरी लाइक नॉवल को ना एंड करते हुए सम अप करता है कि एंड में जो है ना क्या हुआ, ठीक है. दिस प्रोवाइड्स क्लोजर, रिफ्लेक्शन और इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपन्स आफ्टर द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है. मेन इवेंट्स जो भी थे कि हाँ ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, जब वो पूरी स्टोरी खत्म हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, दैट इज द एपिलॉग. इट हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड द आउटकम और मैसेज मोर क्लियरली. फॉर एग्जाम्पल, द नॉवल एंड्स विद एन एपिलॉग सेट 10 years लेटर, कि पूरी स्टोरी हो गई, उसके 10 साल बाद क्या हुआ, तो दैट इज द एपिलॉग. Now we have epitaph, and the meaning is an inscription written on a tombstone in memory of someone. मतलब when someone dies and they are buried on the ground, तो उनका जो tombstone होता है उस पर कुछ ना लिखा होता है, ठीक है. And that is a short statement or a message written in remembrance of someone, ठीक है. It usually expresses respect, love or a summary of the person's life or character. Example, the grave had a simple epitaph carved in stone. Now we have epithet, and the meaning is a descriptive word or phrase expressing a quality or characteristic. Epithet जो होता है एक descriptive word है, describing word है, जो कि एक person या फिर thing को characterize करता है, ठीक है, often highlighting a particular quality. It can be affectionate, neutral or insulting depending on usage. Example, Alexander the Great is an epithet, ठीक है. उसका नाम नहीं था Alexander the Great, but the Great is added as an epithet to express his quality and his characteristics.
Now we have epitome, and the meaning is a perfect example or embodiment of a quality or class. Epitome is basically a perfect example या फिर एक ideal representation of a quality और type, कि अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये quality का भाई सबसे बढ़िया example ना ये है. When something is the epitome of something else, it fully embodies its essential characteristics. Example, she is the epitome of kindness. मतलब उससे अच्छा example आपको kindness का कहीं पे भी नहीं मिलेगा. ठीक है, कि वो जैसे kind nature के साथ जैसे रहती है ना, वैसे और कोई भी नहीं रह सकता. Now we have epoch, and the meaning is a significant period in history marked by major events or changes. मतलब हिस्ट्री में एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जो कि बहुत हिस्टोरिकली मेमोरेबल है, या फिर उस पॉइंट पे बहुत सारे इवेंट्स या चेंजेस हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम विच इज मार्क्ड बाय इंपॉर्टेंट इवेंट्स और चेंजेस. इट इज ऑफन यूज्ड इन हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट टू शो अ क्लियर शिफ्ट ऑफ बिगनिंग. Example, the invention of the internet marked a new epoch. Now we have equable, and the meaning is calm, balanced, and not easily disturbed by emotions or events. This word basically describes someone or something that is even, steady, and free from sudden changes. ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे sudden evocations नहीं लाएगी. ठीक है, they are calm, balanced, and it is often used to talk about climate, temperament, or conditions that remain calm and consistent over time. For example, he has an equable nature. Now we have equitable, and the meaning is fair, just, and impartial in treatment or judgment. Basically, someone or something which is fair and just, कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहनी चाहिए, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है कि हाँ तुम्हें हम फेवर करेंगे या कुछ भी. ठीक है, दिस इज स्पेशली इन सिचुएशंस जहाँ पे इक्वालिटी अलोन इज नॉट इनफ. ठीक है, it considers individual needs and circumstances to ensure fairness rather than strict sameness. Example, the teacher made an equitable decision. The right decision, ठीक है, कि जो कि just हो, ठीक है, जो justice provide करे. Now we have errand, and the meaning is a short trip taken to deliver or fetch something for someone. एरेंड जो होते हैं एक शॉर्ट ट्रिप होती है जो कि ली जाती है कि कोई चीज़ आपने खरीदनी है. ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक काम करना है या कोई ड्यूटी करनी है. दिस ऑफन इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग, कलेक्टिंग और परचेजिंग समथिंग. एग्जाम्पल, शी वेंट ऑन एन एरेंड टू द मार्केट. Now we have errant, and the meaning is wandering, straying, or behaving wrongly or unpredictably. Basically, this word describes something or someone जो कि अपनी राह से भटक चुका है. ठीक है, that strays from the correct path, rule or behavior. It can refer to physical wandering, कि आप physically कहीं इधर उधर चले गए, but it can also mean moral or social deviation, कि आप morally जो है अब corrupt हो चुके हो. Example, the errant child left the group. Now we have espionage, and the meaning is spying secretly to obtain confidential or political information. मतलब जब आप secretly spy कर रहे हो confidential और political information पाने के लिए. ठीक है, information gather करने के लिए. It involves secrecy, deception and risk. Example, he was arrested for espionage. The next is euphemism, and the meaning is an overly elaborate and ornate style of writing or speech. मतलब एक बहुत ही highly elaborate and artificial style होता है of writing या फिर speech marked by excessive ornamentation, balanced sentences, alliteration and classical references. ठीक है, it was popular in English prose during the 16th century. Example, his writing style showed traces of euphemism. The next is exalt, and the meaning is to praise, honor or raise someone to a high position. मतलब जब आप किसी को praise करते हो, honor करते हो and उनको एक higher position या rank पे पहुंचा देते हो. It can refer to physical elevation, social status or moral admiration. Example, the people exalted the hero. मतलब उसको praise करी बहुत ज़्यादा. The next is exasperate, and the meaning is to annoy or irritate someone extremely. मतलब किसी को irritate करना, frustrate करना, annoy करके रख देना, especially by repeated actions or delays. It suggests loss of patience. Example, his constant excuses exasperated her, irritated her, infuriated her. Now we have excursion, and the meaning is a short journey or trip taken for pleasure or study. An excursion is a short journey जो कि pleasure के लिए या फिर education या leisure के लिए ली जाती है, usually lasting less than a day and involving a group. Example, the students went on an excursion. The next is exhilarate, and the meaning is to make someone feel very happy, excited or joyful. मतलब किसी को बहुत happy, lively, excited, joyful feel करवाना. It suggests a rush of energy and joy. Example, the cold wind
exhilarated her, made her happy. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple, and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words, and root words. It makes learning more organized, easier, and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam-level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.